जैद मुस्तफा यस सर। जी, कोन की क्वेश्चंस बता रहे थे। कोन की डेफिनेशन क्या थी? व्हाट इज कोन, याद है? Yes, द sir. कोन, It's a structure generated by moving straight line passing through a fixed point intersecting a given curve. passing through a fixed point. So if you have a point, suppose it is fixed, you have a line passing through this point. This point is suppose here. This point. So now, just when this line is rotating, keeping this point fixed, so when it will be moving like this, it will be constructing a cone. इस तरीके से cone का shape बनेगा. This line will be rotating like this. So it was coming a cone. Right circular case, you will be having this angle fixed. If I am fixing this angle, it will become a right circular cone. This fixed straight line is called the axis. In that case, it is called axis. So we were drawing the equation of a cone when vertex and guiding curve are given. You are solving, suppose A be the vertex is given to you. In the last class, I have shared the lecture also. A be the vertex, it is your vertex. And suppose some guiding curve. This curve is called guiding curve, where this line is crossing this curve, guiding curve. Suppose it is given in terms of this general 2hxy plus py square plus 2gx 2fy c is equal to 0 and z is equal to. This is the equation of a guiding curve. Because I was considering number 1. So when we solve it, the equation of AP, if A is a vertex, suppose that P is some point on this curve. So I took it like this. Here some point is a vertex, suppose A, alpha, beta, gamma in the space, and you are having some point P here on this guiding curve. Not necessarily circular, any may be curve. Because this is Z is equal to 0, it will be on XY plane. Suppose it is P. So AP equation I can write. The equation of AP. X minus alpha by L. Is equal to Z minus gamma. Okay. Now because it is meeting this at Z is equal to 0. So this can be written as at Z is equal to 0. X minus alpha upon L is equal to Y minus beta upon L is equal to minus gamma upon L. Okay. So it will give you the coordinates of X, Y, Z. So it was coming alpha minus L gamma upon N. Y will become, just take it this side, beta minus M gamma upon N, and Z is 0. Okay. Now this point will lying on this curve. So putting it in 1. So we will be getting the condition of the equation of pole. Now putting this point in the conic one. Putting in 1. We get. So just put it. So X will become alpha minus L gamma by N whole square. We take the next page. Next page. So I will putting it here. Yeah. So it will become A times whole square plus 2hxy. So 2h alpha minus L gamma upon N. Y is theta minus
m gamma upon n, gamma m upon n plus by square plus 2gx. So alpha minus L gamma upon n plus 2fy plus c is equal to 0. Okay. यहाँ से I can eliminate, already eliminating L and M on eliminating, because I want equation in terms of alpha and this alpha beta gamma vertex which is given to you. So I am eliminating LMN from this. So suppose it is equation 3 and say question number 2 इसे 2 कहा था. It was your 2. तो 1 था, 2 ये था, ये this equation was 2. So 2 से एलिमिनेट कर सकते हैं. देखिए इससे L upon N कितना होगा? How much L upon N? L upon N will be how much? From this L upon N will be x minus gamma, x minus alpha upon इस इक्वेशन से z माइनस गामा ना. अगर मैं फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ले लूं तो L upon N will be how much? x minus alpha upon z minus gamma. इस तरीके से एलिमिनेट करेंगे. So eliminate element from 2 and 3. We get so a times alpha minus L upon N की प्लेस से I will be putting x minus alpha upon z minus gamma. और एक गामा ऑलरेडी था इंटू गामा होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एल्फा माइनस एल अपॉन एन द सेम एक्स माइनस एल्फा अपॉन जेड माइनस गामा इंटू बीटा माइनस एम अपॉन एन इज हाउ मच? एम अपॉन एन विल बी वाई माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा इंटू गामा प्लस b times beta minus y minus beta upon z minus gamma into gamma whole square and 2g alpha minus L is x minus alpha upon z minus gamma dot gamma and plus 2f beta minus plus c is equal to 0. और इसको हम सॉल्व करके आई कैन राइट, देखो इसको एलसीएम लेंगे जब आप तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, इसको आप इधर लेंगे तो इट विल बिकम अल्फा जेड माइनस अल्फा गामा एंड माइनस एक्स गामा एंड माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा. ये टर्म कैंसिल हो जाएगा. तो यू हैव ओनली एल दिस टर्म. आई एम सॉल्विंग दिस टर्म. So you have only alpha z minus gamma x. So you got a times alpha z minus gamma x. और डेनोमिनेटर में z माइनस गामा होगा, उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ओरिजिन 0 के साथ. So it will become this. Denominator सब में in every term the denominator term will how much? Z minus gamma whole square. देखो यहाँ whole square है. Here it is 2 times. So it will become in second degree terms. So I am shifting to right hand side. So it will become after solving plus twice h alpha z minus gamma x and beta z minus gamma y. This term will become same. This thing also beta z minus gamma beta and plus gamma beta. Beta gamma cancel out. So you have beta z minus gamma y plus b
बीटा z माइनस गामा y होल स्क्वायर। ये टर्म अलग साइड में करके दिखा रहे हैं, सेलेक्ट करके जस्ट कैलकुलेशन एंड प्लस ट्वाइस g अल्फा z माइनस गामा x इंटू एक टर्म क्या आएगा साथ में यहाँ पे देखो स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर वी डोंट हैव स्क्वायर, यहाँ पर तो स्क्वायर था, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय विच टर्म, बताइए। एक एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगा यहाँ पे, z माइनस गामा। z माइनस गामा, क्योंकि z माइनस गामा एलसीएम लिया है ना हमने यहाँ पे, स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दिया पूरे, इसलिए z इन टर्म्स में z माइनस गामा टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा साथ, क्योंकि ये आपके सिंगल डिग्री के टर्म प्लस ट्वाइस f into here you will be getting same beta z minus gamma y into z minus gamma into z minus gamma and plus c times z minus gamma whole square, क्योंकि c कोई टर्म ही नहीं था कोई, is equal to 0. So this is the equation of cone, and you can see it is a कैसी इक्वेशन है ये, होमोजेनियस इक्वेशन है और डिग्री 2 देगी, होमोजेनियस है, व्हाट इज सेकंड होमोजेनियस, डिग्री। यस सर। होमोजेनियस मींस एवरी इन एवरी टर्म यू हैव डिग्री 2, इसे ओपन करेंगे है ना, देखो डिग्री 2 है, it has degree 2 product when you are producting, it is also square, so it is called equation of cone. So this means you can say which is the required, which is equation of a cone, which is the required equation of the cone, so it represents the cone when vertex is given to you some alpha beta gamma and guiding curve is given in this form. Okay, so this सर cone is, जी बताइए। सर ये इक्वेशन होमोजीनियस है? सेकंड डिग्री इक्वेशन है एक्चुअली, it's a second degree equation, not homogeneous, it's a second degree equation. ओके सर। हाँ, it's a second degree equation, क्योंकि इसमें होमोजेनियस में तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो वैसे तो इसमें सब टर्म 2 डिग्री के आएंगे, होमोजेनियस क्या होता है, व्हेन एवरी टर्म इज ऑफ सेम डिग्री, तो देखो जब आप फर्स्ट टर्म ओपन करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा गामा जेड एक्स, तो 2 डिग्री के टर्म आएंगे सारे यहाँ पे, देखिए है ना। बट सर जो लास्ट में जो दो टर्म लिखी हुई है सी इंटू जेड माइनस गामा हाँ टू ये होल नहीं स्क्वायर, आएगा, इसमें तो नहीं आएगा। हाँ इसमें नहीं आएगा, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, इसमें आपका आएगा जेड स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2 गामा जेड, तो गामा तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये होमोजीनियस नहीं बनेगी इसकी वजह से, है ना। बाकी सारे टर्म्स आपके शायद बन जाए बाय, इस टर्म में क्या होगा, बीटा जेड स्क्वायर, ये भी नहीं बनेगा है ना, एफ वाला भी नहीं बनेगा और जी वाला भी नहीं, हाँ तो होमोजीनियस नहीं है, लेकिन सेकंड डिग्री की इक्वेशन कहलाएगी, क्योंकि सेकंड डिग्री इसमें हाईएस्ट डिग्री सेकंड है, so you can say this is a second degree equation in x y z. So which is a second degree equation in x, y and z. So it all is represented by a second degree of equation. You can say here all is represented by a second degree equation. Second degree equation. Now if your vertex is at origin, then what will happen? Here I was taking the vertex at any arbitrary point.
Now, if your vertex is at origin, then we can write the equation. That is your 17.6 article. Equation of a cone with vertex at the origin. At the origin. So here I will take general equation. Let the general equation of second degree in x, y, z be in x, y, z. ये पता है कि कोई भी कोण जो है अभी हमने देखा कि सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी, तो आई एम टेकिंग अ जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2ux प्लस 2fy प्लस यू सॉरी यू के बाद v आएगा 2ux प्लस 2vy 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू। तो जनरल इक्वेशन आपकी सेकंड डिग्री है, तो जाहिर है सेकंड इसमें सारे टर्म्स आएंगे एक्स वाई जेड के और साथ में एक प्रोडक्ट टर्म होगा एंड देन सिंगल टर्म्स। सपोज इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ second degree which represents a cone, which represents a cone. इसे नंबर 1 डाल देता हूं, which represents a cone. तो यहाँ से I will derive कि what will be the equation, what it will become when your vertex is origin. So let P be any point on the I will take vertex at origin and I will take let P be any point. Suppose P x dash y dash z dash be any point on the cone. कोड पे कोई पॉइंट है और वर्टेक्स ओरिजिन, so that point will be passing through this origin है ना. I can take P passing through origin. Suppose you have this is the origin and it is some cone, so I can take this P I am taking on the cone x dash y dash z dash, so I can take this is the origin, so I can find the equation of this generator OP. यह कोन पर है तो PO will be what? It will be the generator. Then I can find this. Then equation of OP. What will be equation of OP? देखो x minus 0 इसके TRs कितना होगा x dash minus 0 y dash minus 0 z dash minus 0 है ना, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होगा. तो आई कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. क्या होता है x minus 0 अपॉन dr, so x upon x dash is equal to y upon y dash z upon z dash. इसको हम सपोज सम इक्वल कर दें सम लैम्डा के इक्वल कर दिया, कोई भी स्केलर की इक्वल है, तो इससे यू विल बी गेटिंग a point on the cone x dash lambda y dash lambda z dash lambda. Okay, this point must lie on the cone. So I can say for
all values of lambda, the point x is equal to x dash lambda, x dash lambda या lambda x dash और y dash lambda z dash lambda. This point lie in 1. ये पॉइंट आपका फोन के अंदर लाई करेगा because this point I have taken on the generator, so I can put it in 1. So putting in 1, तो 1 में x की जगह x dash lambda या lambda x dash y dash lambda and z dash lambda, I am putting it here. So it will become how much? So you can see here lambda term will be coming in everywhere. So I can take lambda square common. What will be coming? लैम्डा स्क्वायर अगर आपने कॉमन है ना, यहाँ पे x जगह रखा आपने x डैश लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ये जो टर्म्स है इन सब में से लैम्डा स्क्वायर टर्म कॉमन आ जाएगा, ये जो सेकंड डिग्री के टर्म्स है यहाँ पे इट विल बिकम लैम्डा स्क्वायर है ना, लैम्डा y डैश लैम्डा z डैश, सो लैम्डा स्क्वायर आई एम टेकिंग कॉमन, सो यू विल बी हैविंग ax डैश स्क्वायर प्लस by डैश स्क्वायर प्लस c डैश स्क्वायर प्लस 2f y dash z dash plus 2g z dash x dash plus 2h x dash y dash plus what about this term? यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? क्यों भाई? लैम्डा लैम्डा कॉमन आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ही सिंगल ये आपकी 1 डिग्री की टर्म, so here lambda will be coming. So you can take twice lambda in fact, है ना, 2 भी है तीनों में, so I can take twice lambda common, so you have x dash u के साथ सॉरी u x dash plus v y dash plus w z dash and plus d is as it is, d is a constant term, this equal to 0. Okay, lambda square plus 2 lambda plus d is equal to 0. Now here you have, because lambda I am taking any arbitrary, you know, I can put so many values of lambda. So it's a quadratic equation lambda. But when you are equating it 0, it will be having so many values of lambda. Lambda की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? Lambda तो I can put any value. Lambda is an arbitrary. So it means what? ये जो x, ये जो points होंगे, they are infinite many points on the generator which is lying in the cone. So when you have this thing, so here it will be having infinite roots. When you have a quadratic, so it has infinite roots. Means if you have equation ax square suppose plus bx plus c is equal to 0, any quadratic equation, any quadratic polynomial in x, it has infinite roots, it will become identity. Some कहते हैं identity. Identity means your a is equal to b is equal to c is equal to 0. If it is the case, it is called identity because it will become 0 is equal to 0, and it will, in that case it will be having infinite roots. क्यों? क्योंकि x की कुछ भी वैल्यू रख दीजिए हमेशा सेटिस्फाई करेगी, है ना. So here also you have so many values of r, I can put it. So if it is 0, so when it will be 0, because I cannot take this, so you will have to take the coefficients. तो ना यहाँ a की जगह पर coefficient of lambda square है, b की जगह पर coefficient of lambda and this c. So it will be giving you, so this must be identity. This must be identity.
सो दैट मीन्स आइडेंटिटी है तो कोफिशिएंट्स इसके 0 होने चाहिए। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है आपका, ए एक्स डैश स्क्वायर प्लस बी वाई डैश स्क्वायर प्लस सी डैश स्क्वायर। This is your first term, and then second term coefficient of lambda is twice of this 2 can you can shift to 0. So ux dash plus by dash plus w z dash is equal to 0 and d is equal to 0. This term. So now I will solve it. So now if here u v w are not 0, from this I will get the equation. So now if suppose, so I will solve it. Now here if u v w they are not 0, not all 0, then what will happen? So what I will say, then this x dash, y dash, z dash will be satisfying. Then the point, this p times of x dash, y dash, z dash, it will be lying on the plane ux plus vy plus wz is equal to 0. भाई अगर ये u v w 0 नहीं है तो क्या होगा? This point will be satisfying इस इक्वेशन को अगर आप देखें, and which is not possible because I have taken, which is not possible. Not possible. Because I have taken the point on this any guiding curve. So this point lying on the generator. So this must be 0. So UVW must be 0 here. So UVW must be 0 and D must be 0. D तो है 0 आपका यहाँ पे. So it means what? What is the equation remaining? Only this. So the equation of cone becomes ax square plus by square. सिर्फ ये क्वेश्चन रह गया आपके यहाँ पे, मैंने इक्वेशन लिख रहा हूँ तो आई विल रिप्लेस एक्स डैश वाई डैश बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2fyz प्लस twice gzx is equal to 0. Now it is a homogeneous equation actually. तो यहाँ पे सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है बिकॉज एवरी टर्म इज ऑफ 2 डिग्री. इसकी डिग्री 2 है, y की डिग्री 1, z की डिग्री 1. दिस बिकम्स which is a homogeneous equation of second degree. Okay, second degree. So any homogeneous equation of second degree will be representing a cone passing through the origin. ना provided यहाँ पर एक condition होती है where discriminant this delta, जो discriminant होता है इसका a h g h d f and g f c, this should be non-zero. ये क्यों होता है भाई? डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा हुआ आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1 में, क्यों भाई बताइए? जैद जैद है, चलेगा जैद Yes, मुस्तफा. sir.
Yes, sir. Where we have this, then discriminant should be not 0. क्यों है ये? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। Question is that कि where here I solved this and I got this equation of homogeneous second degree homogeneous है ये तो है ना? So यस it is the सर। equation. तो यहाँ पे we have condition where the discriminant of this, discriminant क्या होता है? अगर मैं इसकी coefficient ले लूँ A H G, ये discriminant है ये, this should be not 0. ऐसी चीज आपने शायद उधर पढ़ी है। यस सर पढ़ी है। तो क्यों था ये कंडीशन, क्यों होती थी, कुछ याद है? यस सर, अगर ये 0 हो जाएगा तो सर ये 2 लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा सर। पेयर ऑफ लाइंस को, दिस इज अ कंडीशन है। यस सर। अच्छा, तो इसलिए इट शुड बी नॉट 0। अगर नॉट 0 है तो ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? इफ इट विल बिकम 0, इट विल बी रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लाइंस है। सर 2D में तो सर ये कर्व को रिप्रेजेंट करता है, अगर डेल नॉट इक्वल टू 0 है तो सर। हाँ हाँ, अच्छा सर जो कॉनिक सेक्शन होते हैं उसे। जी जी, ठीक है सर, इसको एक बार कंफर्म करिएगा जरा क्या है, ठीक है। पर रेस्ट्रिक्शन ये है कि दिस डैश शुड बी नॉट इक्वल टू 0। सो हियर वी हैव, so I can write as a remark that every homogeneous equation of second degree represents a cone, short में मैं जल्दी लिख दे रहा हूँ, represents a cone with its vertex at the origin, जब भी कोई आपको एक होमोजेनियस इक्वेशन लिखी हो सेकंड डिग्री, तो हमेशा यू कैन से इट रिप्रेजेंट्स अ कोन। इस पे एक रिमार्क और कॉर्लरी है, बिकॉज आपकी बुक में इसे ऐसे थ्योरम दिया था। एक कॉर्लरी क्या होती है? स्मॉल रिजल्ट्स ऑफ द थ्योरम्स, उन्हें हम कॉर्लरी बोलते हैं। कॉर्लरी, COROLLARY। कॉर्लरी क्या है? इफ L M N are the TRs, direction ratios of the generator, OP passing through the origin, then equation of OP will be what? Then equation of OP is x upon L, है ना। उसके जगह मैं L रख दूंगा, जो एग्जैक्ट रख रहा था अभी यहाँ, इसके यहाँ L रख सकता हूँ अगर LMN दिए हुए हैं तो। x upon L is equal to y upon M is equal to z upon N. So you can write it, now if any point satisfying, so L इसको अगर हम R के इक्वेट करा दे, so this means what? LR, MR and Z is equal to NR. They must satisfy the equation of the, इक्वेशन क्या थी आपकी? जो इक्वेशन लिखी है fxyz is equal to 0, इसको अगर मैं fxyz से रिप्रेजेंट कर दूं, fxyz is equal to 0 for every value of R. So that means अब जब x y z की जगह आप LR MR NR रख देंगे, तो I can write this equation will be reducing in f of LMN is equal to 0. So जो इक्वेशन आपकी x y z में, that can be written as f of in terms of TRs. X y z को I will replace by
LR, MR, NR और R आपका कॉमन आएगा. You can remove your R. So this equation will become in this. तो अगर LMN में होगी तो you can write the equation in terms of LMN. So it will be a second degree equation. Okay. एक already इसमें मैं थोड़ी सी लिखी हुई है. Next we have a condition for a general equation of second degree to represent a cone and find what is the condition for the general equation. जो भी मैंने general equation लिखी थी आपकी, ये तो आपकी equation सही. So this is a general equation. ax square plus this is general equation. So what is the condition on this? जैसे अभी आपने कंडीशन बताई कि अगर डेल्टा 0 हो जाता है तो इट रिप्रेजेंट्स अ, if delta 0 it represents pair of lines. ऐसी क्या कंडीशन आनी चाहिए इस पे कि it represents a cone. So in the next class, time is short, I have another class. So in the next class is tomorrow, I will write the condition for this f(x,y,z) is equal to ax square plus by square plus cz square plus and so on. The last term आपको क्या देता है? G is equal to 0. What is the condition that this represents a cone? उसी कंडीशन आपकी यहाँ पर आएगी. 4/4 का डिटरमिनेंट आएगा जब मैं इसे सॉल्व करूंगा. A H G U H B F B G F C W and U V W D. This determinant is equal to 0. It is the condition that this will represent a cone. यहाँ पर एक कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, h is the coefficient of, किसका कोफिशिएंट था? y x y का, है ना. टर्म ये था आपका 2h x y. g is the coefficient of zx, u is the coefficient of किसका है ये?